Welcome back to Atma Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with class 9th, book Civics, chapter 5, Working of Institutions. Book Civics, chapter 5, Working of Institutions. It is page number 78. Okay, we go to 78. There's an overview, democracy overview, that is overview of chapter 4. Okay, democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work with and within the institutions. This chapter is about the working of such institutions in a democracy. Okay. जैसे हमारे स्कूल्स में, ओके, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और सब अपने अपना काम कर रहे हैं. सबसे टॉप में प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, देन टीचर्स, स्टाफ, राइट. और फिर उसके अंदर फीस लेने वाले अलग होते हैं, पियोन्स अलग होते हैं, क्लर्क्स अलग होते हैं. सो एक एक इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी लोग काम करते हैं. दे वर्क इन सच इंस्टीट्यूशंस. ऐसे ही हमारी कंट्री भी देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसे संभालने के लिए, जिसे चलाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारी कंट्री आगे बढ़े. सिंस वी हैव a huge population and so many बहुत बड़ी हमारी डाइवर्सिटी कंट्री है. सो ईच स्टेट हैज़ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, और उसके नीचे भी मतलब एक एक स्टेट को कितने लोग रूल कर रहे हैं. एंड कंबाइन इज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. So this chapter is about the working of such institutions in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. Yes, obvious है, disputes तो होंगे ही. जहाँ इंसान है वहाँ disputes तो possible है. हर एक जगह disputes है. घर से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक डिस्प्यूट्स है. और सॉरी और उन्हें सॉल्व करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर कोर्ट्स, दैट इज जुडिशरी. डिस्प्यूट्स घर से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक है. इवन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी होता है. एक स्टेट का दूसरे स्टेट से भी होता है. नो डाउट इट इज कॉमन, पॉसिबल है. जहाँ इंसान है वहाँ डिस्प्यूट्स तो होंगे, बिकॉज सबके ख्यालात एक जैसे नहीं मिलते हैं. कोई यस कहेगा तो कोई नो कहेगा, कोई नो कहेगा तो कोई यस कहेगा. सो उसमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. सो उसके लिए जुडिशरी है टू सॉल्व सच डिस्प्यूट्स. इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस. यू नो दैट कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, और ये सब अपना अपना काम करते हैं. दीज आर द मेजर इंस्टीट्यूशंस जो मेजर डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग आवर कंट्री. ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. You have already read something about these institutions in earlier classes. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. In this case of each institution we ask, what does this institution do? ये institution क्या काम करती है? हर एक different काम करते हैं. How is this institution connected to other institutions? What makes its functioning more or less democratic? The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. In this chapter we take our examples from the working of the national level government, national level, central government. You can think of and discuss examples from the working of the government in your state. We go to page number 79. How is a major policy decision taken? That is a government order. On August 13,
1990, the Government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that. देखो कैसा है इसका नंबर OMN number 36012/31/90 EST SCT dated the Joint Secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order. It was quite short, barely 1 page. It looked like an ordinary circular or notice. You can see below. ये देखो नीचे आपको दिख रहा है. बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं. पूरी दुनिया तो काम कर ही रही है, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूशन, हमारी कंट्री को चलाने के लिए भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters. But this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. See students, just have a look. I will give you 3 minutes, 4 minutes. Just have a look on this page number 79. ये जो 2 order दिए हैं. Students, today I am sharing the PDF of History Chapter 3 and Geography Chapter 4. Okay, as you get this video of mine, you will also see the PDF of History Chapter 3 or Geography Chapter 4. Okay, so I hope you had just gone through this notice. इस तरीके से send किया जाता है, just to show to the readers. We go to page number 80. This order announced a major policy decision. It said
that 27% of the vacancies in civil posts and services under the Government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. In another name, for all those people who belong to castes that are considered backward by the government. अभी SC, ST और OBSC जो लोग होते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्पेशल कोटास रखे हुए हैं, ओके, सेपरेट में, ताकि वो अपना मतलब उन्हें भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिले, कॉलेजेस में, इस तरीके से. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes. Now a new third category called SCBC was introduced. Only persons who belong to backward caste were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not compete for their jobs. मतलब I had told you कि इनके लिए स्पेशल कोटा रखा गया है, क्योंकि अगर इनके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाहे, बिकॉज बच्चे तो होशियार होते ही हैं, ज़रूरी नहीं कि गरीब के बच्चे होशियार नहीं होते पढ़ने में, अगर उनको पढ़ने मिले तो कई बच्चे हैं वो टॉप भी कर जाते हैं. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स स्पेशल कोटाज उनके लिए निकाला गया है इन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस में. फिर रेलवेज में SC, ST और OBSC वालों के लिए है. देन मतलब इनके लिए स्पेशल कोटा वर्क जॉब के लिए रखा गया है. अदर्स को नॉट, और दूसरे इनकी जॉब में रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते. Then the decision makers who decide to issue this memorandum, okay, who decide to issue this memorandum, that is clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed the document. The officer was merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions, of which the department was a part. We can guess that certain major decisions would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. That is, President is the head of the state. All सभी को पता है, and is the highest formal authority. Maximum authority इनके पास है. Prime Minister is the head of the government and actually exercises all governmental powers. He takes most of the decisions in the cabinet meetings, और यही cabinet meeting cabinet members को elect करते हैं और cabinet meeting रखी जाती है. Then parliament consists of two houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. The Prime Minister must have the support of a majority of Lok Sabha members. So were all these people involved in the decision regarding the office memorandum. The office memorandum was the culmination, that is एक long chain है of events. The government of India had appointed the second backward classes commission in 1979 and it was headed by BP Mandal. Hence it was popularly called as a Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes. The report and recommendations were discussed in the parliament. For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the Commission's recommendations. Then came the Lok Sabha election of 1789. In this election, manifesto, यानी जनता दल promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. मतलब फिर से उसे implement करेंगे. The Janata Dal did form the government after the decision. Its leader VP Singh became the Prime Minister. Several developments took place after that. Okay. Then we go to page number 81. The President of India in his address, जो President address करते हैं, अपनी जनता को कुछ बोलना चाहते हैं, to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of the Mandal Commission.
और फिर प्रेसिडेंट ये आगे प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों मंडल कमीशन को फिर से इम्प्लीमेंट किया गया, फिर से रेकमेंड किया गया, उनको बताते हैं. On 6th August 1990, the Union Cabinet took a formal decisions to implement the recommendations. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about the decision. जब कोई भी decisions वो लेते हैं आपस में तो इसे Parliament में discuss करते हैं. Through a statement in both the houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha of Parliament, the decision of the Cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the decision, cabinet decision, and took the minister's approval. An officer signed the order on behalf of the union government. This was how ये जो नंबर दिए was born, और ये मतलब ये नंबर कैसे आया था, मतलब इसे देते हैं ना on August 13, 1990. For the next few months, this was most hotly debated issue in the country. और जब ये हुआ था तो तभी उस वक्त एकदम मतलब गरम गरम डिबेट थी, ये हर तरफ इसी के चर्चे थे. उसको कहते हैं दैट इज हॉटली डिबेटेड इशू, कि मतलब उस वक्त ये गरम गरम बात थी, हर एक लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे. Newspapers, magazines were full of different views and opinions on this issue. It led to widespread protest. बहुत लोगों ने protest किया था, and counter protest, some of which were violent. उस time protest हुआ था और थोड़ा serious protest था. People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservations, or some that inequalities among उस वक्त मतलब अगर inequality हम करते हैं, जैसे जॉब वाले पे अगर inequality करेंगे तो फिर जॉब मिलने लोगों को मुश्किल हो जाएगा. जैसे अगर कोई हिंदू का बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो कहे कि नहीं हम लोग अपने कंपनीज में मुस्लिम्स को नहीं लेंगे या ये कास्ट को नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा ना. सो ये इनइक्वालिटी तो हर जगह काम नहीं आती है. They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. They would be denied jobs even though they could be more qualified. ज़रूरी नहीं है कि बहुत क्वालिफाइड है तो आपको जॉब नहीं मिले. कई बार ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें जॉब नहीं भी मिल पाती है. कई बार कुछ ऐसा सिचुएशंस होती है, they would be denied jobs even though they could be more qualified. Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity. और इसकी वजह से जॉब नहीं मिलना, लोगों के पास पैसा नहीं होना, काम नहीं होना, दिस ऑल इफेक्ट्स द नेशनल, हमारी सब कुछ हमारी कंट्री को बहुत इफेक्ट होता है. इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट. मतलब गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, यानी उनको डिसीजन पसंद नहीं है. अभी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन रिलीज करती है एवरी नाउ एंड देन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग उसे एक्सेप्ट करें, राइट. सो वी ओनली टेक दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजंस आर टेकन, कि कितने बड़े बड़े डिसीजंस हैं. उनको पता होता है कि इस डिसीजन में शायद लोग थोड़े वक्त तक प्रोटेस्ट करें, कुछ हो, लेकिन कई बार उनको लेने पड़ते हैं ऐसे डिसीजंस. अब कोई भी गवर्नमेंट है ये हर वक्त ऐसे रॉन्ग डिसीजंस तो नहीं लेगी जिससे उनके सिटीजन्स को परेशानी हो, लेकिन कई बार कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसमें कई बार सिटीजन्स को परेशानी होती है. व्हाट टू डू, करना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी कंट्री को चलाना, सब करना. एंड सो डाइवर्सिटी कंट्री वो भी. हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट? You know that the Supreme Court and the High Court in the India settled disputes arising out of governmental decisions. ये जो disputes है आपस में, ये Supreme Court या High Court ही solve करते हैं. Some persons and associations opposed to this order
filed a number of cases in the courts. और जो opposition party थी उन्होंने बहुत सारे इनके खिलाफ कोर्ट में केस किया. They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indira Sohani and others versus Union of Indian case. 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both the sides. मतलब सुप्रीम कोर्ट वही डिबेट सॉल्व करती, चाहे किसी का भी डिबेट हो, ओके, पहले उनका दोनों का सुनती है, उसके बाद सोचती है कि हाँ ठीक है, अगर जनता को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है तो ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा. कई बार वो डिसीजंस लेने ज़रूरी हो जाते हैं एट सर्टेन टाइम. That is Indira Sohani and others versus Union of Indian case. 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides. By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the Government of India was valid. The Supreme Court ने फिर डिसीजन ले लिया था 1992 में कि यस, ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया ये वैलिड है, इसे लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. और जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है ना, तब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its original order. It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. Yes, उन्होंने ये भी कहा कि जो बैकवर्ड क्लास में है लेकिन अच्छे पैसे वाले हैं, वेल टू डू है, अच्छे खाते पीते घर के पैसे वाले हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाए. सिर्फ बहुत गरीब है जिनको ज़रूरत है, जिनके पैसे नहीं, उन्हीं को दिया जाए. According to the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on September 8, 1993. The dispute thus came to an end and this policy had been followed since then. और उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें उनकी नहीं मानी और उसके बाद it came to an end. लेकिन ये पॉलिसी आज तक चलती आ रही है. See, you can see who did what in the case of reservations in backward classes. Supreme Court, Cabinet, President, government officials. Okay, then we go to, that is next page number 82, need for political institutions. We have seen one example of how the government works. Governing a country involves various such activities. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. It collects taxes and spends the money thus raised on administration, defense, and development programs. It formulates and implements several welfare schemes. Some persons have to take decisions on how to go about these activities. Others have to implement these decisions. If disputes arise on these decisions or their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. It is important that everyone should know who is responsible of doing what. It also important that these activities keep taking place even if the person in key positions change. So to attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies. Such arrangements are called institutions. A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. The constitution of any country lays down basic rules on the powers and functions of each institution. In the example above, we saw several such institutions of work. ये पूरा लेसन स्टूडेंट्स वही है कि किस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है. Okay, so from page number 82, that is need for political institutions, I will continue in my
today, along with this class, I will also send few PDFs of history and geography lesson. Just have a look and complete your books on time. So with this, I wrap up my class here. Thank you to all.